Good morning, students. Today is 24th February 2021 and we'll be taking sequences, third topic of first chapter. Sequences. A sequence is a list of objects arranged in a definite order. एक definite order में जब हम कुछ objects को arrange करते हैं, that is called as a sequence. Okay, sequence means it is a sequence of some object, maybe numbers, maybe alphabet, maybe any object which is being arranged in some order, that is called as in some fixed definite order, that is called as a sequence. So now what is the basic difference between set and sequence? Set क्या होता है, कोई भी order उसमें कोई fix नहीं रहता है. A set has no order and no duplicated elements. Set में कोई एक particular order नहीं जिसमें arrange करना है और elements का duplication जो रहता है, that is also not there in case of sequence. So the difference between set and sequence is that in case of set is a collection of objects, that's all. This is the definition of set. Set is a collection of object of same kind. So in set it is not mandatory to have duplication. Duplication है नहीं है, no duplication is there in case of set. In case of set there is no fixed order. दोनों चीजें नहीं है, duplication भी नहीं होना चाहिए और फिक्स्ड ऑर्डर भी नहीं होना चाहिए इन केस ऑफ सेट. बट सीक्वेंस में क्या होता है, एक फिक्स्ड ऑर्डर होना चाहिए एंड एलिमेंट्स में भी डुप्लीकेट एलिमेंट्स हो सकते हैं और उनका ऑर्डर भी फिक्स है कि इसी ऑर्डर में, स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखना है ऑब्जेक्ट्स का. दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन सेट एंड सीक्वेंस. ओके, दिस इज द नॉमेनक्लेचर. इन दिस वे वी कैन राइट द सीक्वेंस. और सेट को हम किस में लिखते हैं, बेसिकली वी राइट सेट इन कर्ली ब्रैकेट. कर्ली ब्रैकेट में सेट लिखा जाता है एंड सीक्वेंसेस वी राइट एज इट इज विदाउट दिस. ओके, let's see the example of sequences like 1, 2, 3, 2, 2, 3, 1 is a sequence but not a set. Why we are not calling it as a set and why we are calling it as a sequence? Because this is the nomenclature of, first of all, sequence. Sequence is being written straight away with commas करके straight away sequence को लिखा जाता है 1, 2, 3 first. Second is there is a this is having duplicate values, whereas set में जो है duplicate values नहीं allowed है. और set को कैसे लिखते हैं, we write set in a कर्ली ब्रैकेट. सेट को हम किसके अंदर लिखते हैं, वी राइट सेट लाइक दिस, कर्ली ब्रैकेट 1, 2, 3. दिस इज द वे वी राइट अ सेट. ओके, the sequence 1, 2, 3, 2, 2, 3, 1 and 2, 2, 1, 3 are made from elements of the set 1, 2, 3. जो ये सीक्वेंस है, दिस सीक्वेंस इज मेड अप ऑफ these elements of the set 1, 2, 3. यहाँ पर इस सीक्वेंस में कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है, 1 है, 2 है और 3 है. तो ये सीक्वेंस हो गया हमारा. दिस इज माय सीक्वेंस SEQ एंड दिस इज माय सेट. दिस इज माय सेट. तो सेट को कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे, डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं लिखेंगे. सीक्वेंस में डुप्लीकेट वैल्यूज भी अलाउड है, ठीक है, लाइक दिस. सो दिस इज सीक्वेंस एंड दिस इज द सेट फॉर द सीक्वेंस. द सीक्वेंसेस दिस एंड दिस आर only switch two elements between this only switch two elements, but that alone makes them unequal. See here, 1, 2, 3, 2, 2, 3, 1, 2, 1, 3, 2, 2, 3, 1. So switching of two elements, this is switching of 1 and 2. Here it becomes 2, 1. 1, 2 का क्या बन गया, 2, 1. तो जब हमने इनको स्विच कर लिया तो ये दो अलग अलग सीक्वेंस बन गए. जबकि वही चीज बताइए, ऑर्डर मेक्स अ डिफरेंस. सेट और सीक्वेंस पे ये फर्क है कि सीक्वेंस में अगर ऑर्डर बदल जाता है, फिक्स्ड ऑर्डर होना चाहिए. इट इज इन फिक्स्ड ऑर्डर. सी हियर, इट इज सीक्वेंस हैज अ स्पेसिफिक ऑर्डर. ओके, 1, 2, 3, 2, 2, 3, 1. तो ये सीक्वेंस हो गया. बट यहाँ ऑर्डर बदल गया, यहाँ 2, 1, 3,
2 2 3 1 सेम चीज है, बट यहाँ पर ये दोनों को स्वैप कर दिया, इनको स्विच ओवर कर दिया, तो ये दूसरा सीक्वेंस बन गया। तो ये एक सीक्वेंस है, ये दूसरा सीक्वेंस है। जबकि सेट के केस में अगर मैंने 1 2 3 लिखा है और इसको 2 1 3 लिखा जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये और वो एक ही सेट कहलाएंगे। दैट मीन्स इफ आई राइट सेट लाइक दिस, if I write set like this curly bracket 2 1 3, so this is called as a set। दोनों का दोनों ये सेट और ये सेट सेम है, जबकि ये वाला सीक्वेंस और ये वाला सीक्वेंस डिफरेंट है। बिकॉज सेट में ऑर्डर अगर चेंज हो जाता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीक्वेंस में it is in the fixed order, specific order, okay, and data may be duplicated। in case of set the data should not be duplicated and the order does not matter, okay। now what are the different types of sequence? Sequence may stop after n steps। if the sequence stops after n steps it is called as a finite sequence, and if it goes on, it does not stop, then it is called as an infinite sequence। sequence मतलब जो ऑब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्ट्स है, अगर वो ऑब्जेक्ट्स स्टॉप हो जाते हैं, उनका जो हम राइटिंग कर रहे हैं, इफ वी आर लिस्टिंग आउट दोज ऑब्जेक्ट्स एंड इट स्टॉप्स, देन इट इज कॉल्ड एज फिक्स्ड फाइनाइट सीक्वेंस, एंड इफ इट डज नॉट stop, that means it goes on, then it is called as infinite sequence। so formulas can be used to describe the sequences। so sequences is basically used to describe the these two types of formulas, recursive formula and explicit formulas, okay। like suppose if I say numbers, list of numbers, sequence of numbers 1 2 3 4 dot 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 dot, it goes on, okay, then we call it as a infinite sequence 1 2 3 4 and it goes on। तो अगर ये इस तरह से चल रहा है तो ये इनफाइनाइट सीक्वेंस होगी, and if we stop it at some point then it is called as finite sequence। so sequence का basically use क्या है? sequences are used to make formulas, and that formulas basically those type of formulas are recursive formulas or explicit formulas। explicit formulas के लिए भी use करते हैं और recursive formula के लिए भी use करते हैं। now let's begin with the recursive sequence। in a recursive sequence the next item in the sequence is determined from the previous value। recursion मतलब क्या होता है? there is a concept of recursion and there is a concept of iteration, okay। so here iteration is not there। recursion means calling a function within a function, same function will be called within the function repeatedly। अगर एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन कॉल होता है, मतलब वही वाला एक फंक्शन के अंदर वो खुद का ही फंक्शन दोबारा कॉल होता है, then that is called as a recursion, recursive। you might have written factorial of a number के लिए recursive function लिखा होगा definition, जिसमें fact का जो definition है उसके अंदर fact के अंदर fact को ही हम कॉल करते हैं, then that is called as recursive definition। so recursion means what? calling a function within a function, उसी function को उसके अंदर दोबारा कॉल करना, उसको recursion बोलते हैं। iteration या looping का मतलब होता है to perform some set of instructions repeatedly number of times। कुछ set of instructions को repeatedly perform करना, उसको iteration बोलते हैं या looping बोलते हैं। but recursion में क्या आता है? function जो होता है एक function, उसके अंदर वही वाला function बार बार कॉल करना, repeatedly कॉल करना कुछ एक fixed number of times के लिए, then that is called as recursive। similarly here we are using the concept of recursive sequence। what do we mean by recursive sequence? recursive sequence means the next item in the sequence is being determined by the previous value। जो उसकी पहले की वैल्यू थी उससे हम नई वैल्यू को निकाल के लेकर आएंगे, this is what is recursion। now difficult to determine say 100th element since previous 99 need to be determined first। तो डायरेक्टली अगर 100th एलिमेंट अगर मुझे निकालना है तो पूरे पहले फर्स्ट से लेकर 99 एलिमेंट्स मुझे मालूम होना चाहिए, then only we can determine the 100th element because we are using the concept of recursion। तो recursion में क्या होता है कि previous value मालूम होगी तो next value निकलेगी, उसके बाद की निकालना है तो पहले वाली वैल्यू मालूम होनी चाहिए, next value निकालेंगे। so it is in the form of one after the other, that is why it is recursive sequence। sequence means one after the other। so for example जैसे हमने फर्स्ट वैल्यू ली a1 equal to 1, a2 equal to 2, okay।
and we form the next number by adding the previous two numbers. पहला नंबर क्या हुआ 1, next number क्या हुआ 2, Fibonacci series if you know. Then the next number, third number, that is an equal to an minus 1 plus an minus 2. This is the formula to determine the next value. That means addition of the previous two. 1 plus 2 is equal to 3. This is the next value, next number which is being determined using the recursion. Now the fourth number will be from the addition of second and third. 2 plus 3, that is 5. Then 3 plus 5 is how much? 8. Then next value 5 plus 8 is how much? 10. Then 8 plus 10 is how much? 18. Similarly, 10 plus 18 is how much? 28, and it goes on. So how you are getting the next value? We are getting the next value by adding the previous two. So the formula to get that next value is a recursive formula. An equal to an minus 1 plus an minus 2. So here a1 is 1, a2 is 2. Suppose if I put n की वैल्यू 3 डालते हैं, अगर मुझे 3 का चाहिए थर्ड वैल्यू, व्हाट इज थर्ड वैल्यू? देन इट इज इक्वल टू a 3 minus 1, that is 2, plus a 3 minus 2 is 1. Okay, so a3 is equal to a2 plus a1. What is the value of a2? 2, plus what is the value of a1? That is 1. So 2 plus 1 is equal to 3. So we determine the a3 equal to 3, this value. Okay, now let's say for a4. a4 is equal to a4 minus 1, that is 3, plus 4 minus 2 is 2. So what is the a3 value? a3 value will be 3, plus what is the value for a2? a2 is 2. So 3 plus 2 is how much? 5. So this is how you calculate. So using recursion, we have formed this formula. Using recursive sequence, we have formed this formula. This formula is called as Fibonacci series. So formula to find out the Fibonacci number, next Fibonacci number. Okay. This is the example for recursive sequence. Now let's see the example for explicit sequence. In an explicit sequence, the nth item is determined by a formula depending only on the nth value. In this case, when we talk about the recursive, it is possible only with the previous value. Recursion में previous value मालूम होगी तो ही next value पता चलेगी. But here we are writing explicit formula. Sequence are also used to find out the explicit formula, explicit sequence. तो explicit sequence कैसे निकालेंगे? Using the nth term directly, we can find out, no need of recursion. So in an explicit sequence, the nth item is determined by a formula depending only on n. Directly n के ऊपर वैल्यू डिपेंड करती है, उसकी वैल्यू से हम nth आइटम फाइंड आउट कर सकते हैं. This is easier to determine any element. Say for example an equal to 2n. Now if I say an equal to 2n, that is the multiple of 2. So this is the formula to find out a series which is multiple of 2, that is list of even numbers. So if I say a of 1 is equal to a1 is equal to 2 into 1, 2. a2 is equal to 2 into 2, that is 4. Then a3 is equal to 2 into 3, 6. a4 is equal to 2 into 4, 8. Likewise, here there is no need of getting the previous value. Say for example,
if I want to get the value for a 10th value, 10th item, 10th number in the sequence. So 2 into 10 is 20. Directly we can calculate the nth term. So this is explicit sequence. Okay, now let's see the strings. Sequences can be made up of characters too. Sequence जरूरी नहीं है कि numbers के होंगे. Any object लिखा है. We have seen the definition that sequence is a collection of object, is a list of objects arranged in a definite order and duplication allowed. So let's say sequence of string. String can be made up of characters too. String जो है वो किससे बन सकती है? String is a set of characters which is a sequence. So sequence may be set of characters, that is string. So for example, WAKE 1 space UP. So what we have taken, wake up as a sequence. Wake up जो है उसकी value है वो sequence में डाली है. So removing the commas and you get a string. commas को remove कर दिया तो हमको क्या मिला? हमको string मिला. ये commas निकाल दिया हमने, इसको हमने एक string में डाल दिया. So strings best illustrate difference between sequence and sets. Say for example, A, B, A, B, A, B. A is a sequence, that is, this is a string. So the corresponding set is A, B. क्योंकि set में क्या होता है? Set में duplication allowed नहीं है, तो हमने वही सारे elements लिखे जो जिससे ये sequence बना है. Sequence में सिर्फ A और B है, तो A और B का set बना. So set is a collection of objects with no duplication and the members should be put up in a curly bracket. तो A और B से कौन सा sequence बना? A B A B A B A B, like this. Okay, so within double quotes we have formed a string. Now let's see the linear array. Principles of sequences can be applied to computers, specifically arrays. So there are some differences, though these are the differences as the difference between the sequence and array. Let's see. Array क्या होता है? Array is a collection of similar type of data. Again, what is the definition of array? Array is a collection of similar type of data. एक ही type का जो data है उसका collection को हम array बोलते हैं, linear array. So principle of sequence can be applied to computers, specifically arrays. Okay. Sequence of मतलब sequences किसको apply करते हैं? Computers को apply कर सकते हैं, especially array के concept में sequence को apply कर सकते हैं. Now let's see what is basically a sequence and how it can be applied to array. So sequence are well defined. So what are sequence? Sequence are well defined. Modification of any element or its order creates new sequence. अगर हमने एक sequence में कुछ भी change किया, सिर्फ एक value को भी swap कर दिया, remove कर दिया, delete कर दिया, add कर दिया, then it forms a new sequence. तो उसको हम नया sequence बोलेंगे, जबकि ऐसा case set के साथ में नहीं है. Then the concept of an array. What is an array? Array may not have all elements initialized. Array में जरूरी नहीं है कि कोई सारे के सारे elements को initialize किया जाए. Modification of array by software में occur. Array में हम changes कर सकते हैं, एक element है, उसको change करना है, update करना है, delete करना है, तो it does not form the new array. That array can be modified. जबकि sequence में एक नया sequence बन जाता है वो. Even if the array has the variable length, we are ultimately limited to finite length. अगर array में variable length है, तो भी हम उसको ultimately हम उसको finite length में convert कर सकते हैं, finite length में रख सकते हैं. तो कहने का मतलब है कि हम जब भी हम एक sequence बना रहे हैं, उस sequence से हम array का concept भी use कर सकते हैं. Okay, we'll begin with characteristic function later on tomorrow.